So next we will do the criteria of continuity. This is a third. You can write criteria of continuity in terms of sequence. And another name is sequential continuity. Sequential continuity. So what did it tells? दोनों तरफ से है, necessary है, sufficient condition भी है, if and only if के साथ है. Suppose we have a function defined from the one metric space to the another metric space. Clearly it is D1 and this is D2, right? Now, what the criteria says. Suppose you have a sequence xn in the metric space xt which converges to x. Point of convergence भी उसी सेट के अंदर आ रहा है और फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है. तो इसकी इमेज क्या हुई? f of xn. इसकी इमेज क्या आएगी? f of x. अगर xn x को अप्रोच कर रहा है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो xn तो f of xn किसको अप्रोच करेगा? f of x को. ये गिवन है और ये टू प्रूफ है दोनों तरफ से. if and only if for any sequence xn converges to x implies f of xn converges to f of x, then f is continuous. And if f is continuous and corresponding to every convergent sequence xn in x, there exists a convergent sequence f of xn in y which converges to some points in y, right? So अब मैं exact statement लिखने जा रही हूँ. statement क्या है? Suppose we have defined a function. This is a function from xt1 to yt2. Okay, ji? We two metric spaces and we have defined a function on that. Then f is continuous at a point A if and only if for every sequence an, you can take xn also, converging to A, we have limit n tends to infinity f of an is equal to f of a. So you may change the name. If I have taken an, so it may be a, it may be an, and it may be a. If function is continuous, if and only for every convergent sequence in the metric space xt1, there exists a corresponding convergent sequence in the metric space y2. In other words, if an is tending to a implies f of an is tending to f of a. अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आने हैं या आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है मेट्रिक स्पेस में, आपने यही सिक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी को यूज करना है. बेटा डेफिनेशन समझ आई है कि नहीं आई? Yes, sir. मैं अब प्रूफ शुरू कर रही हूँ. आई एम स्टार्टिंग द प्रूफ. ठीक है, मान लिया लेट f बी continuous at a belongs to x and let an be a sequence in x such that an is tending to. एक राइट देखो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स, ये एक बार लेके चलेंगे. फिर आप ये पूरा का पूरा प्रूव करने का मतलब ये नहीं कि ए एन टेंडिंग टू ए भी प्रूव करना है. ए एन टेंडिंग टू ए लेके चलेंगे टू प्रूव करेंगे एफ ऑफ ए एन टेंडिंग टू एफ ऑफ ए. दिस वी विल प्रूव. क्लियर? सो पहले ही बताया मैंने, सीक्वेंस में सेट में ए एन ए को टेंड करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए एन किसको टेंड करेगा? एफ ऑफ ए को, विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन दैट एफ क्या है? राइट. चलिए तो आगे चलेंगे. अब नाउ प्रूव करना है, गिवन है ए एन टेंडिंग टू ए, प्रूव करना है एफ ऑफ ए एन टेंडिंग टू एफ. कंडीशन कौन सी चल रही है? f इज कॉन्टिन्यूअस. चलो कॉन्टिन्यूटी की जो सिंपल सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी. बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस.
as f is continuous at x is equal to a belongs to x. Then beta, for a given epsilon there exists delta greater than 0. You know the definition such that distance between f of x and f of a, it is less than epsilon when distance between x and a is less than delta, right? Since an is tending to a, ये सिंपल यहाँ पे इनवाइट डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस. हर पॉइंट की क्लैरिटी हो कि ये हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लग रही है. यहाँ पे सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात हो रही है तो इट मींस डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस लगा रहे हैं. वही फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या डेल्टा, क्योंकि हम यहाँ पे ना एप्सिलॉन नहीं लेंगे क्योंकि एप्सिलॉन हमने फंक्शनल वैल्यू के लिए चूज किया, लेकिन जो डोमेन की वैल्यू है उसके लिए क्या चूज कर रहे हैं, डेल्टा. तो अब यहाँ पे डेल्टा चूज करेंगे, बस ये लिखेंगे देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट distance between a and a it is less than delta. A and for all n greater than or equal to m, right? This is number one. This is number one. ये सारे x कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल एक्स में से. वो हर x जो कैपिटल एक्स में से आ रहा है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. तो क्या ये ए एन कहाँ से आ रहा है, कैपिटल एक्स में से. तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय ए एन इन नंबर 1. नाउ रिप्लेस